something. आप जब public figure होते हो, you're public facing, how does that affect your ambitions or your desires? And more importantly, your relationships. Do you think it helped you find love? It broke your heart more times? या तुम कैसे, हाउ डू यू पुट इट इन परस्पेक्टिव? एज ओल्ड सवाल हर इंटरव्यू में तो लोग करते हैं, तुमसे भी करते हैं, मुझसे भी करते हैं, शादी कब करनी है, शादी क्यों नहीं की, आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा यू राइटिंग इट ऑफ फॉर फ्यूचर इज वेल, आपको क्यों लगता है कि मैं आगे जाके शादी नहीं करूँगी? कहती ना आप दुआ करें ना, मुझे क्या पता क्यों नहीं हुई, अल्लाह मियाँ से पूछा, अल्लाह मियाँ शादी करवाते हैं उनसे पूछे. बट डिड इट हेल्प बीइंग अ स्टार? आई एम श्योर यू हेल्प फॉल इन लव, find the right attention, if I may say so. Everything feels right when it's naya. And then you're like, your biggest strength can be thrown at your face. You're too independent, you make too much money, you're on television, it's not a good thing. You speak too much for your own good. What are you wearing? Ye koi time hai shoot pe jane ka. Oh, you're going to Islamabad for the weekend. I've heard it all. Right? You've heard it all. You've been on the receiving end of it. I've been on the receiving end of being not appreciated for being who I am. So successful is one thing. How did you deal with that? Because a lot of people, a lot of women struggle with the fact कि अगर उनका जो सबसे, if they like somebody or if they love somebody और इस किस्म की feedback उससे आ रही हो, it's soul crushing. It is crushing. It is very crushing, and it's so sad because then your own success makes you, your own independence makes you insecure in the sense, meaning you are made to feel like all these things are maybe you haven't done the right thing. Even though you're independent, you're financially independent, you've made a name for yourself, people love you, you have stood up on your own 2 feet, and you're still being told things and it's being held against you. Imagine. So it's not a good feeling, and it makes you question yourself, because at some point I did start questioning myself कि हाँ लेकिन सही तो बोल रहे हैं, अभी टीवी पे काम कर रही हूँ तो उनको तो हाँ मैं तो जीन्स तो पहनती हूँ, मैं हर जगह स्लीवलेस ही पहन के पहुँच जाती हूँ, पाकिस्तान में तो हूँ, सही कह रहे हैं, मेरी ही गलती होगी, नॉट रियलाइजिंग दैट कि दिस इज सम फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज दैट यू शुडंट रियली पुट अप विथ, रियली. डिड यू एवर हैव टू प्रिटेंड इन योर लाइफ टू बी समबडी यू आर नॉट? यानी हम जैसे हैं, हम चाहते तो ये आइडियली कि हमें ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी की अप्रूवल के लिए या वैलिडेशन के लिए तुमने अपने आप को बदला, अनूशा? थोड़ा सा तो अगेन एक बार फिर हमेशा काम करना, लेकिन थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में, या आप करें, आपको जैसे काम करना है आप करें, आपको फिल्म नहीं करना आप मत करें, आपको डांस नहीं करना आप मत करें, आई गेट इट, बट अपने लिए और अपनी समझ से कि मेरे लिए क्या है और क्या नहीं है. बट किसी और के लिए करना इज़ व्हेन यू शुड आस्क योरसेल्फ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, राइट? किसी और के अप्रूवल के लिए या सोसाइटी की अप्रूवल के लिए. लेकिन ये चीज़ आई थिंक सिर्फ उम्र के साथ आती है, ये कॉन्फिडेंस. और फिर लोग आपको कहते हैं कि ये देखो फिर अब इनकी उम्र हो गई है तो शादी भी नहीं हुई, अब ऐसी बातें करें इसलिए तो शादी नहीं हुई. लेकिन खुश हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है. और वो बहुत कम लोग हैं भाई. When you look around you, there are very few people who are content and genuinely happy in their situation. And I think I've come to that point where I'm very content with my situation. So now whatever anybody says, I mean, I look at them and I'm like, आंटी लेकिन मुझे आपके साथ तो ज़िंदगी नहीं बदलनी. अगर कोई मुझे 2 करोड़ रुपए भी दे दे और बोल दे कि तुम ये आंटी बन जाओ तो तुम्हारे बारे में ये कह रही हैं. My life is better than yours. So how do you Not my life is better than yours, but I'm more sorted where I am in my world too. You're peaceful. You're peaceful and you're open to the blessings and the things that you would like to create. देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग manifestation की या law of attraction की बात करते हैं. It is you have to be your desire, you have to be open to it. And from that place of fear, from that place of lack, you will never be able to create something. You won't be. So, and you don't have to be badtameez, and you don't have to fight the system. You don't have to be a rebel without a cause, to get through. I think your communication with, if you have faith, your communication with God, your self-reliance, the ability to feel like I will take care of myself. And then, of course, surrounding yourself with people who actually support you genuinely. So I had to filter a lot of people out of my life. I had to change my circle of friends. I had to change my lifestyle a little bit. And I went a little bit more towards, as cliched as it may sound, because everybody is saying spirituality and meditation these days, but
ठीक है, even if it sounds cliched, it is effective. So go for it, you know. It became very self-reliance, and the confidence comes with time though, because the insecurities always stay there, but it will come, it has to come, and when it does, it's so liberating. You know, it It's reminds such a great me feeling. it reminds me of 3 Idiots. वो नहीं होता जब उस बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, वो एक इंटरव्यू में जाता है, वो कहता है यार आपको यू नीड टू फिक्स योर एटीट्यूड. कहता है आप अपनी नौकरी रख लें, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, बिकॉज सब कुछ तुड़वा के एटीट्यूड आया है. तो आई थिंक इट्स द सेम विद कॉन्फिडेंस एज वेल. बहुत कुछ आपको झेलना पड़ता है, एंड नॉट इन अ बैड वे.